Good afternoon. My name is Jose Anthony Garcia. I am going to talk to you about COVID complication in Ecuador. Definitions. Coronavirus is a group of viruses that cause illness ranging from the common cold to the more serious illnesses such as mild easy respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome. Most people infected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover with requiring special treatment. However, some will become severely ill and require medical attention. कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट इम्प्रूव कर रहा है, लोग रिकवर कर रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि एक और इशू जो आ जाता है वो है पोस्ट कोविड सीक्वल का। और इस पे अब काफ़ी हद तक डिटेल्स भी आ गई हैं जो हमें पहले नहीं पता था। पहली वेव में हम कई लोग समझ नहीं पाए थे कि कोविड के बाद भी कई लक्षण ऐसे हैं जो रहते हैं, और अब इसके लिए काफ़ी हद तक लोगों ने इसका पीरियड भी डिफाइन किया है कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 12 हफ्ते रहें तो इसको हम ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद भी 12 हफ्ते तक काफ़ी लक्षण रह सकते हैं और उनको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनमें कॉमन सिम्टम्स तो हम यही जानते हैं कि कई लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि सांस की तकलीफ अभी भी है, लंग फंक्शन उनके नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक आती है, लेकिन वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पाते, चेस्ट में टाइटनेस रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खांसी कब रहती है, हफ्तों भर खांसी रहती है कोविड के बाद, और कई छाती में दर्द या घबराहट या पल्स ज़्यादा रहने के लक्षण रहते हैं। ये सब लक्षण जो हैं ये पोस्ट कोविड या कोविड इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण रह सकते हैं। एक कॉमन सिम्टम सिंड्रोम जो है वो भी कॉमन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी कई लोगों में है जिसमें थकावट, फटीग, जॉइंट पेन, बॉडी एक्स, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश लगना, सुबह उठ नहीं पाना या सिर में दर्द रहना कई हफ्ते ये रह सकता है, जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और सिम्टम है जिसका नाम जनरल सोशल मीडिया में ब्रेन फॉग दिया गया है, जिससे जो कोविड से लोग रिकवर कर जाते हैं कभी कभी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम करने में उनको दिक्कत होती है कई हफ्तों तक, और कई दफ़ा इंसोम्निया होता है कि सो नहीं पाते या डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, और जैसे हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, केसेस ज़्यादा रिकवर करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल कम्युनिटी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स को डेवलप करे जहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो। एक जो हमने लास्ट टाइम पाया था कि अगर हम लोगों को योगा कराए तो उससे जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आती है, और एक्सरसाइजेज करने से लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग इज देयर। तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट बढ़ेगा तो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू होंगे, एंड वी शुड प्रिपेयर सो दैट वी आर एबल टू मैनेज देम। Application in medicine. The incubation period around 5 to 2 days, which mean 4 7 days, living since between symptoms onset. Viral and host factor influence the pathogenesis of SARS-CoV-2. H2 is a type and membrane protein that are receptor in the lungs. Here, kidney staining mainly associated with cardiovascular disease. Primary viral replication has been documented to occur in the mucosal epithelium of nasal cavity and pharynx. Pros and cons.
Plus, the presence of COVID-19 occurs in three plexes: the early plexus of viral infection and replication, the pulmonary DAS, and the hyperinflammatory DAS. Most patients with confirmed infections have mild symptoms and do not require more than symptoms treatment. Cons. Patients with cardiovascular risk factor of underlying cardiovascular disease are particularly vulnerable populations, with a very high rate of complication and death. 2030 showed more severe symptoms and required hospital admissions. Mortality in hospitalized patients can be around 10, 20, and if they develop severe COVID-19, I can reach 40 fighting. Something pertaining to the lung, first thing is lung fibrosis, especially seen in patients who had severe COVID pneumonia or ARDS and were on oxygen support or ventilator support for quite some time. So initially when we were seeing COVID patients in the last wave, we thought this fibrosis would be permanent, but surprisingly we are seeing lungs getting back to normal slowly, maybe over a long period of time. The other infective complications post-COVID we see are tuberculosis and fungal infections like mucormycosis. Because in the management of severe COVID, we have to give them steroids so that the inflammation is suppressed. And there's a practice of giving tocilizumab also, which is again an immunosuppressive therapy. So both these therapies make the patient more vulnerable to this communicable diseases like tuberculosis and the more fatal fungal infection called mucormycosis. So these are some long-term complications pertaining to the lung. Patients might also have reactive airway disease. They present to you like a bronchial asthma. So we also treat it as like bronchial asthma and we label it as post-viral bronchial hyperresponsiveness. There are other vascular complications like pulmonary thromboembolism. There are neurological complications patients might present after the viral phase, like with symptoms like Guillain-Barré syndrome. We are seeing psychological complications, patients landing up in insomnia, depression, and all. And there is something called post-COVID fatigue, which can last up to months together. So in post-COVID fatigue, there's nothing much we can offer, just give them some reassurance and symptomatic therapy. But we always have a close watch on infectious complications post-COVID like tuberculosis and mucormycosis because they are curable when you start treatment in the early phases. To apply in Ecuador. Approximately 20 of patients with COVID require hospitalization. 10 in general area, 5 occur in intermediate are in the right mean, are admitted to intensive care due to their serious conditions. After embryological examination shows common blood not speak abundance. So far in Ecuador, the National Institute for Public Health rate and take him to uh, 7480 uh, 17 0 samples for RT PCR COVID-19, of which are confirmed cases which PCR tests. New cows and deals. The indicators on a daily report the accumulated number of samples. Thank you for reactive PCR testing in authorized laboratory in Ecuador. In short, we know that might be more than ounce samples per person during the diagnostic process. Conclusion. In December 2019, the first case of pneumonia was causing agents on the indication as the news coronavirus.
hard photos were detected in China. The virus caused disease conditional was virulence and capacity for transmission together with the absence of the vaccines of sufficient framing have their presence impact on healthcare system.